Good morning. Today I will discuss a database management system. Topic is normalization. Okay, we are starting uh, database management system. Topic is normalization. First, we think about what is a normalization. The normalization in a Dbms, the database design technique to organize a data, splitting a large table into a smaller related ones to reduce a data redundancy duplication, meaning that here duplication data redundancy means a duplication, and improve a data integrity, eliminating insertion, updation, and deletion anomalies, guided by a series of rules called a normal forms: 1NF, second NF, third NF, etc. etc. It ensures that the data dependencies are logical, making the database more efficient, consistent, and easier to manage. The next thing is the it's divide a large table into a smaller tables and define a relationship between them. We know that a relational in the relational database we store a data in a relational form. Okay, and the third point here is that every non-key attribute must provide a fact about the key, the whole key, and nothing but them. Here, why do we need a normalization? Without normalization, database suffer from a data anomalies. First thing is insertion anomaly. Here we can discuss three type of anomalies. The first is insertion anomalies, update anomalies, and deletion anomalies. Okay. The update anomalies, unable to add a data because some part of the key is missing. The update anomaly, the changing the data in one place but leaving it unchanged in the others. And deletion anomaly, accidentally losing unrelated data when deleting a record. Right? Types of normal forms. There are actually in the database there are 5 types of normal forms: first normal form, second normal form, third normal form, fourth normal form, fifth normal form, and BCNF. The BCNF is a stricter form of all of all of the normalization forms. Okay, the normal forms are a set of rules in a DBMS to structure a database tables, reducing data redundancy and improving a data integrity by eliminating anomalies such as insertion, update, deletion, with each form being stricter than the last. Okay. Typically, stopping a 3NF or BSNF for efficient, well-designed database. They ensure data is atomic, none-key attribute depend fully on the primary key, no transitive dependency, and better handling of multiple valued or joint dependencies for higher forms, 4NF and 5th NF. ओके जैसे अगर हम इसको नॉर्मल भाषा में अगर हम देखें तो हमारे पास जो नॉर्मल फॉर्म्स होते हैं तो जनरली हमारे पास में 6 तरह के नॉर्मल फॉर्म्स होते हैं: फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, फोर्थ एंड फिफ्थ, जिसमें जो जो और एक और हमारे पास में स्पेशल नॉर्मल फॉर्म्स होता है जो कि जिसे हम कहते हैं BCNF, मतलब बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म। बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म्स हमारे पास में जितने भी नॉर्मल फॉर्म्स हैं उनमें सबसे स्ट्रिक्टर फॉर्म कहा जाता है। तो इस आगे हम देखेंगे जितने भी नॉर्मल फॉर्म्स हमने अभी आपको बताए हैं तो वो आगे हम चल करके देखेंगे कि ये सारे नॉर्मल फॉर्म्स कैसे काम करते हैं। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म. The first normal form require that each column in a table contains the atomic values and that each row is uniquely identified. This means that a table cannot have
table cannot have repeating groups or arrays of columns and each row must have a unique primary key. हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसा कि हमारे पास में नीचे में टेबल है कि जो टेबल है उसमें 3 हमें कॉलम्स दिख रहे हैं, मीन्स हमें 3 एट्रीब्यूट दिख रहे हैं, कस्टमर आईडी, नेम एंड फोन नंबर। तो आप यहाँ देख सकते हो कि फोन नंबर में हमारे पास में जो वैल्यूज हैं, एक ही रो में मल्टीपल वैल्यूज है। फोन नंबर्स जो है वहां पर हम देख सकते हैं कि 555 1 2 3 4 555 5 6 7 8 ये जो हमारे पास में ये जो फोन नंबर में है, तो यहाँ पर एक ही वैल्यू होने चाहिए थे, बट हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास में 2 वैल्यूज हैं। तो 2 वैल्यूज हैं, तो ये जो हमारा नॉर्मल फॉर्म्स है, तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म्स में हम यहाँ पर जो फोन नंबर जो हमें दिख रहा है जिसमें 2 वैल्यूज है, उसमें से एक वैल्यूज को ही रखेंगे और एक वैल्यूज को हम किसी और कॉलम में रखेंगे या उसके लिए हम कोई और टेबल बनाएंगे। मतलब यहाँ पर है कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हमारे जितने भी कॉलम्स होंगे उनमें जो डेटा होगा वो सारे डेटा हमारे यूनिक होंगे। ओके, मतलब आप देख सकते हैं कि हमने पहले ही कहा है कि दैट ए टेबल कैन नॉट हैव अ रिपीटिंग ग्रुप्स और एरेज एज कॉलम्स एंड ईच रो मस्ट हैव अ यूनिक प्राइमरी की। अब प्राइमरी की हम पहले ही बता चुके हैं कि एक प्राइमरी की के थ्रू हम 16 कॉलम्स को यूनिक बना सकते हैं, और प्राइमरी की में के थ्रू हम डेटा को यूनिक बनाने के लिए हम इम्प्लीमेंट करते हैं प्राइमरी की को। और प्राइमरी की एक टेबल में एक ही प्राइमरी की क्रिएट हो सकता है, मल्टीपल प्राइमरी की हम क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन एक प्राइमरी की के थ्रू हम तकरीबन 16 कॉलम्स को हम यूनिक बना सकते हैं। साथ ही साथ प्राइमरी की जो है वो प्राइमरी की सिर्फ और सिर्फ यूनिक वैल्यू को एक्सेप्ट करता है, डुप्लीकेसी को एक्सेप्ट नहीं करता। अगर पहले से कोई कॉलम है उसमें अगर हम प्राइमरी की लगाना चाहते हैं, तो ये हम इंश्योर करेंगे कि जिस कॉलम में हम प्राइमरी की लगा रहे हैं वह कॉलम के सारे डेटा यूनिक हो। और दूसरी बात कि प्राइमरी की कभी भी नल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे कॉलम के। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, जैसा कि आप देख सकते हैं कि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में second normal form builds on the first normal form by requiring that each non-primary key column in a table is a fully functionally dependent on a primary key. अब यहाँ पर है कि हमारे पास में जो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के लिए सबसे पहले तो जो टेबल है वह पहले से फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, मतलब उसके सारे वैल्यूज एटॉमिक होने चाहिए, सिंगल वैल्यूड होने चाहिए। और दूसरी बात कि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म को अचीव करने के लिए उस टेबल के जितने भी कॉलम होंगे वे सब के सब प्राइमरी की, जो टेबल में जो प्राइमरी की होगा उस पर फुल्ली फंक्शनली डिपेंड होंगे। दिस मीन्स दैट a table should not have a partial dependency when a non-primary key column depends on only part of the primary key. For example, you can see in the table, a table is a second normal form for each non-primary key column is fully functionally dependent on the primary key. For example, a table list orders and their line items. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर आईडी में हमारा प्राइमरी की नहीं है, लेकिन कस्टमर आईडी में भी प्राइमरी की है, लेकिन आइटम आईडी को आप देखो तो उसमें प्राइमरी की लगा हुआ है। तो हमारे जितने भी हैं, ऑर्डर आईडी हो गए, कस्टमर आईडी हो गए, कस्टमर नेम हो गए, आइटम नेम हो गए, क्वांटिटी हो गए, ये सब के सब यहाँ पर किस पर डिपेंडेंट है? आइटम आईडी पर है। ओके, लेकिन आप ये जो टेबल देख रहे हो यहाँ पर ये रूल्स को वायलेट करता है। मतलब इस रूल्स को यहाँ पर अगर आप इस टेबल का एग्जांपल देखो तो यहाँ पर कोई भी टेबल में कोई भी कॉलम प्राइमरी की वाला नहीं है, मतलब कोई भी कॉलम यूनिक वैल्यू वाला नहीं है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास में इस तरह का टेबल है तो इसको हम सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले कोई एक कॉलम को हम
यूनिक बनाएंगे मतलब प्राइमरी की लगाएंगे, और उसके बाद जितने भी हमारे कॉलम्स होंगे जो फंक्शनली डिपेंड होंगे उस प्राइमरी की के ऊपर। दिस इज द थर्ड नॉर्मल फॉर्म। The third normal form builds on a second normal form by requiring that each non-primary key column in a table is not transitively dependent on the primary key. This means that a table should not have a transitive dependency where a non-primary key column depends on another non-primary key column. To explain further, let's consider the example of the table in list of the customer order. Now, this means that suppose that the customer ID is dependent on order ID and customer CT is dependent on the customer ID. So here partially customer CT is dependent on order ID. तो इस तरह के जो है इस तरह के सिचुएशन नहीं होने चाहिए थर्ड नॉर्मल फॉर्म में. And next is bias chord normal form. The bias chord normal form is also called a BCNF. The BCNF is a stricter form of 3NF that applies to a table with more than one candidate key. The BCNF requires that each non-trivial dependencies in a table is a dependency on a candidate key. This means that a table should not have a non-trivial dependencies where a non-primary key column depends on other non-primary key column. The BCNF ensures that each table in a database is a separate entity and eliminates redundancy. For example, a table is a BCNF if each determinant is a candidate key. In other words, every non-trivial functional dependency in a table must be a candidate key. Okay. Advantage and disadvantage of normalization. The first is the advantage of normalization is that reduce the data redundancy, improve data consistency, simplify the database maintenance, improved query performance. And the disadvantage of normalization is decrease the complexity, decrease read performance, increase the write performance, increase storage space, and over normalization. So I think you understand about the concept of normalization, and thank you very much.